छिछोरे और थ्री इडियट्स जैसी मूवीज देख के अब तक ये बात तो कंफर्म हो गई होगी कि हॉस्टल लाइफ इज सो मच फन. But that isn't all. There are more things to hostel life than just fun. Before going to that part, I would like to share my hostel experience with you all. Now, in my case, मुझे बचपन से hostel life का बहुत ज़्यादा शौक था. I used to fascinate the idea of living in a hostel, the financial freedom, the independence, and living with your friends. Sleeping with them, working with them, studying with them, cooking with them, praying with them, and like वो आपकी family बन जाते हैं. So I fascinated the idea that you can pick and choose your family. It was very interesting, and I was emotionally and mentally ready for hostel life and all the challenges that came with it. But even then, in my third to fourth week, I started feeling homesick. Everything seemed like it's burning, it's on fire, everything is running, the time is running, and I cannot get hold of anything. I started questioning myself. I started questioning myself and everything around me. I thought that maybe this wasn't the right decision. Maybe this wasn't the right time to leave my family and start a new chapter of my life. And it was difficult. It was difficult even when I was emotionally and mentally ready. Now, if we consider the spectrum of those people जो अभी बिल्कुल mentally ready नहीं है, जो for some reason, one reason or another, they are living in hostel, they are not yet ready for everything. अब उनके लिए कितना difficult होगा. So there are some points which मैंने observe भी किए, मैंने बात भी करके देखी अपने fellows के साथ इस बारे में. There are some points that I want to cover, and points cover करने के साथ साथ I would like to give suggestions or advices जो कि I think and I truly believe work for almost everyone. So the first thing that is very difficult for a freshie is managing everything, especially time. Now, अब जब आपने हर चीज़ खुद करनी है, आपने अपना खाना खुद देखना है, अपना सोना खुद देखना है, और एक सेट टाइम होता है खाने का, मेस का, जिसमें आपको जाके खाना होता है. उसके साथ साथ आपने ये भी देखना होता है कि आप उस वक्त सो तो नहीं रहे, बिकॉज यूजुअली लंच आपका मिस हो जाता है बिकॉज पीपल डू टेक नैप्स. अब घर में तो ये होता था कि अगर आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, कोई आपका क्विज़ है आपकी अकेडमी में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, तो हर चीज़ पर बैन लग जाता था. आपको आपके रूम में खाना दिया जाता था, आपकी डाइट का ख्याल रखा जाता था, मेहमानों का आना बंद हो जाता था, टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दी जाती थी जब आपने सोना होता था, और हर चीज़ आपकी अम्मी या आपके बड़े आपके मैनेज करते थे. लेकिन हॉस्टल में ये सब कुछ आपको अकेले मैनेज करना होता है, अलॉन्ग विद मैनेजिंग टाइम. अब सब कुछ चीज़ें मैनेज तो कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ मैनेज करते करते इतना टाइम गुजर जाता है कि दूसरी चीज़ मैनेज नहीं हो सकती. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज़ keep a record of all the things that you do in your everyday life in your hostel, and try to manage your time. Try to sleep on time, wake up on time, because जब आप क्लास से पहले उठ जाते हैं तो there are many things that you can prepare for the day, and hence it is easy for you to manage time. Then comes the second problem, that is managing and adjusting your time with your roommate. It is very important. Sometimes ये होता है कि आपका जो roommate होता है वो night owl होता है and you are an early bird, and it really gets messed up जब आप लोगों की sleeping schedule, आप लोगों की चीज़ें करने के schedule नहीं match होते. And in this case, I really recommend that you keep a close check कि आपका और आपके roommate का कितना time difference आ रहा है. So you can work on it. You can adjust some of your things, or you can ask your fellow to adjust a few things in his or her timetable as well. Communication is the key. And that leads me to my third point, that is वाइबिंग विद योर रूममेट. ना समटाइम्स ये होता है कि आपको एक ऐसा रूममेट मिल जाता है जिसके साथ आपकी नहीं बनती फॉर वन रीज़न और फॉर अनदर रीज़न, एंड इट माइट बी के देर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ योर्स जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, एंड आपका रूममेट वही चीज़ें कर रहा होता है. There are many examples of this, but I do not want to get into it because of the time limitation. So ये मैंने ज़रूर देखा है, और मैंने अपने फेलोज़ को जिनको अपने रूममेट्स के साथ एडजस्ट करने में मसला आ रहा था, उनको मैंने ये ज़रूर एडवाइस दी है, टॉक टू देम. Communication is
the key, the most important key. Talk to them कि यार देखो मेरा ये मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम ये चीज़ करने की बजाय ये चीज़ कर लें, इस वक्त करने की बजाय इस वक्त कर लें तो it would be a lot better. एंड इवन अगर चीज़ें बेहतर नहीं होती, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होती, तो एटलीस्ट बेहतर हो जाएंगी. एंड देन कम्स द केस जबकि वो भी stubborn है, आप भी stubborn हो, because there are some things that you both cannot compromise on. Talk to your warden, because wardens are always there to facilitate you. Talk to them and you can get your room swapped with somebody जिनके साथ आपकी बनती है, जिनके साथ you vibe and you think you can adjust well with them. Talk to the other person as well that I want to swap rooms with you and explain the whole situation. And then comes the point कि food. अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्टल का खाना बुरा लगता है and they cannot accept the fact that they are not in their home now and आपकी अम्मा ने आपको आपके पसंद का खाना नहीं बना के देना और आपकी मर्ज़ी से अब खाना नहीं बना करेगा. Nobody is gonna come and ask you आज क्या बना दूँ आपके लिए. So here comes the major difficulties. Why? Because हर एक जगह का एक अपना इन्वायरमेंट होता है, अपना फूड होता है, और जो पानी होता है दैट प्लेज अ की रोल इन फूड. एंड पानी के साथ एडजस्ट करना, अपनी बॉडी को उस पानी के साथ इम्यून करवाना, फेमिलराइज करवाना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल. बहुत से लोग हॉस्टल के स्टार्टिंग डेज में बीमार भी हो जाते हैं, उनको डायरिया हो जाता है बिकॉज दे कैन नॉट कंज्यूम द वाटर दैट इज़ अवेलेबल इन हॉस्टल. व्हाट सम पीपल डू इज़ दे टेक मिनरल वाटर बॉटल्स. And I do not recommend it because it is an expensive alternative and not feasible at all. Because जब आप खरीद के पानी पी रहे हो तो आपको obviously एक mind में होगा कि यार I need to save it as well because I'm on a budget. तो what you can do is start with ORS because ORS will help you कि आप थोड़े familiar हों अपने पानी पे. Then आहिस्ता आहिस्ता आप अपने जो regular water available है उसको पीना शुरू करें ताकि आपकी body उस पानी को accept करे. Then comes the food. If you cannot adjust well with the food, you can take packed items. You can cook your own food with a hot plate in your room. But even then, it is very time consuming. So the only thing you can do is look for alternatives. अगर आपको mess नहीं अच्छा लग रहा, there must be a cafeteria. And if there is not a cafeteria, there might be some shops nearby where you can order and आप जाके अपना खाना pick कर सकते हैं. लेकिन the best suggestion I can give is adapt, because hostel life is all about adapting and being flexible. Hostel life is not for you if you are rigid, if you are stubborn. There are many things जिस पे आपको compromise करना पड़ेगा. There are many things जो कि आपको अपनी लाइफ में पीछे छोड़ के आनी पड़ेंगी. आपको नई चीज़ें अडाप्ट करनी पड़ेंगी, आपको नए तौर तरीके अडाप्ट करने पड़ेंगे, आपको ऐसे लोगों के साथ भी रहना पड़ेगा जिनको आप पर्सनली नहीं पसंद करते क्योंकि आपकी वाइब मैच नहीं होती. सो हॉस्टल लाइफ इज़ ऑल अबाउट अडेप्टिंग, learning new things, and making the best out of these days. I hope this is a complete guide for you, at least for freshies, and it might help you in one way or another. I will be making another video about my hostel and hostel of GIK. Till then, bye.